Welcome to all. In today's lecture on accuracy and precision, that term, that is the accuracy, and the another term, that is the precision, both are correlated with each other. In today's lecture, we will discuss in detail about the accuracy and the precision. In all of the analysis, whether they are the physical analysis or the chemical analysis, they can never be free from errors or the uncertainties. You can see in that particular slide, when you hit on these particular thing, you can see the hitting occurs at different places. Means the central point is the exact point where we must have to hit. If we are not hitting at that particular point, that is the central point, all other things are the errors. In terms of the analysis also, if we are doing any of the experiment in such a way that the reading must corresponds with the central point, other readings means other crosses shows the reading different from the central point reading, all these called errors. When we do the experiment, that experiment takes something time, and because of that we have plotted here graph between the error and the time. Means when time passes, then a particular thing happens, and when the time passes, any experiment going on, then there will be something chances of error or the uncertainties. Because of that, we can plot these different type of graphs. Different persons have different handling, and due to different handling, there may be the chances of different type of errors. We will study all these things in detail. As we already studied that the chemical analysis can never be free from the error or the uncertainties, and it is well known that any of the measurement, whether we are weighing something, we are taking the volume something, we are measuring the pH, etc., anything, all these measurements are only have the limited accuracy. You can see in that particular video, a student is doing titration, means a solution which is in burette, other in the titration flask, taken with the help of the pipette. During that experiment, we got something reading. You can see here initial reading, for example, here taken is 12.02 ml, and the final reading that's come out to be 32.12 ml. 32.12 ml. You can again see initial reading is 12.02 ml and the final reading is 32.12 ml. Now the volume used to find out the end point, that is the 20.10 ml. So that's the difference. If we repeat that experiment at a multiple time and the same experiment been repeated by another student, there may occur the chances of something error, or it may also there may also be the possibility that the result of both the students may be the same if they are doing in an excellent manner. But if any of the student is doing any of the experiment at their best, even then there may be the chances of something error, because error may be of different type. We will discuss about the different type of error in the next lecture. In the present lecture, we will discuss about the accuracy and the precision. You can see in the another experiment also, that is the experiment about the titration, and with the help of the pH meter we can determine the
change in the pH of the resulting solution. Means there will be the something different pH in the titration flask at the initial point before adding of the solution from the burette. But when we add the solution from the burette in the titration flask, then there occurs something change or may not occur any change depending upon the nature of the solutions taken in the titration flask and the burette. If we are adding water in water, for example, if we have taken water in the titration flask and the same water in the burette, then what will happen? Means we are adding water in the water, means there occurs no change in the pH. So means with the help of the pH meter, we can determine the change in the pH. We can find out which type of substances are present, which type of solutions are present in the titration flask or in the burette. So the result may be the same to that of the actual value, shows that there is no error. When we are doing the experiment, generally our results may differ from the actual values. What's going on? Our teacher will provide us two different type of solution. One solution of non-concentration. Non-concentration means non-normality, non-molarity, means the concentration, because the concentration can be expressed in different ways. The concentration may be expressed in molarity, normality, mole fraction, in percentage, in ppm. There are the different ways to express the concentration. Means the teacher will provide you these two solutions, which out of these, one of them you will take in the titration flask using the pipette, and the other you will take in the burette with the help of the conical, with the help of a funnel. आप ऊपर फनल लगाएंगे, यहाँ पे इसके ऊपर फनल, यहाँ पे फनल लगा के तभी आप सॉल्यूशन को ऐड करते हैं, आप डायरेक्ट कभी ऐड नहीं करेंगे. फिर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे. जो अननोन सॉल्यूशन है, द सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल यू हैव टेकन द सॉल्यूशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन इन द burette, then what is the concentration of that unknown solution? You will find that concentration using the titration with or without the help of the indicator. There are many titrations in which the solution itself acts as the indicator. For example, in the KMnO4 titrations, the KMnO4 which has the pink color, which itself acts as the indicator, while in other acid base titrations we generally use the different type of indicators. Sometimes we take the phenolphthalein. During the determination of the hardness of the water, we determine the methyl orange also along with the phenolphthalein, depending upon the type of the hardness present in the water. Means the teacher everything known about these two type of solution. Teacher have complete knowledge about the concentration of the solution present in the burette, present in the titration flask. But the teacher will provide you these two solution. Out of these two solution, टीचर आपको सिर्फ एक ही सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बताएगा, दूसरे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन टीचर आपको नहीं बताएगा, वो आपको डिटरमाइन करनी है. लेकिन टीचर को पता है उस दूसरे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है. लेकिन जब आप टाइट्रेशन की हेल्प से उस दूसरे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करेंगे, तो जो आपका रिजल्ट है वो जो टीचर के अनुसार आपका रिजल्ट आना चाहिए, वो उसी जैसा आ भी सकता है और डिफर भी कर सकता है. दैट इज द मीनिंग हियर. द रिजल्ट may or may not be differ from the actual values. Actual values means जो टीचर को पता है, जो सॉल्यूशन टीचर ने खुद बना के आपको दिए हैं. जब टीचर ने वो सॉल्यूशन बनाया है तो उसको तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का पता है. हाँ, ये बात अलग है कि जब टीचर सॉल्यूशन बना रहा था, जब टीचर वेइंग कर रहा था, सो ड्यूरिंग दैट वेइंग प्रोसेस देयर में अकर समथिंग एरर. हो सकता है कि आप जो टाइट्रेशन कर रहे हैं आप अपनी तरफ से आपने बिल्कुल एग्जैक्ट की हो, लेकिन हो सकता है टीचर के अकॉर्डिंग वेइंग में एरर रह गई हो सकता है आपका रिजल्ट बिल्कुल ठीक हो और जो टीचर कहता है कि ये रिजल्ट आना चाहिए
हो सकता है उसके अंदर कुछ एरर हो, वो एक्चुअल रीडिंग हो ही ना। लेकिन इन सारी चीजों को ना देखते हुए, क्योंकि हमें काम कैसे करना है, जो सॉल्यूशन टीचर ने दिए उसने अपनी तरफ से, टीचर ने अपनी तरफ से सॉल्यूशन बिल्कुल सही एग्जैक्ट कंसंट्रेशन के बनाए होंगे, इन सारी बातों को मानते हुए ही हमें टाइट्रेशन करनी होती है। और फिर अगर हमारे जो रिजल्ट है वो टीचर के रिजल्ट के साथ मैच नहीं करते, तब हम ये लाइन कहते हैं कि द रिजल्ट मे और मे नॉट बी डिफर फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यूज। मीन्स एवरीवन, मीन्स आप सभी जो स्टूडेंट हैं, आप पूरी कोशिश करते हैं, एवरीवन ट्राइज देयर बेस्ट टू मिनिमाइज दीज एरर्स टू गेट रिजल्ट विद एक्सेप्टेबल एक्यूरेसी। टीचर कहता है कि आपका जो रिजल्ट है वो अलाउड होगा 0.5% एरर तक, 0.1% एरर तक, 1% एरर तक, दैट डिपेंड्स अपॉन द टीचर। एक तो बात होती है जो टीचर पे डिपेंड करता है कि वो आपको कहां तक अलाउ करता है। एक होता है कि अभी हम आगे बताएंगे कि रिजल्ट कितने टाइप के होते हैं, किस रिजल्ट को अच्छा माना जाता है, कौन गुड रिजल्ट होता है, कौन मॉडरेटली गुड रिजल्ट होता है, कौन लो एक्यूरेसी का रिजल्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एरर। मीन्स व्हाट इज एन एरर? हमने बताया ना, इफ देयर इज something mismatching between the actual result and the observable result. Observable means जो रिजल्ट हमने ऑब्टेन किए अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो हमने जो एक्सपेरिमेंट किया, हमारा जो रिजल्ट है वो ऑब्जर्व्ड रीडिंग है, और जो टीचर के अनुसार जो रिजल्ट आना चाहिए, जो टीचर के पास लिखा हुआ रखा है टीचर की कॉपी में, दैट इज द एक्चुअल रीडिंग। क्या हमारा जो रिजल्ट, हमारा जो ऑब्जर्व्ड रिजल्ट है, क्या वो एक्चुअल रीडिंग के साथ मैच किया, नहीं किया? तो क्या हमारी रीडिंग जो टीचर की रीडिंग है उससे कम आई या ज्यादा आई? तो मीन्स ऑब्जर्व्ड रीडिंग में से अगर हम डिफर कर दे, माइनस कर दे एक्चुअल रीडिंग को, तो जो भी अगर डिफरेंस कुछ भी आता है, अगर हो सकता है जीरो हो, अगर सेम है तो जीरो होगा, मीन्स नो एरर। तो आपकी जो एरर है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। आपका आंसर टीचर वाले रिजल्ट से कम भी आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है। तो मींस एन एरर इज डिफाइंड एज द रियल वैल्यू एट द आउटपुट ऑफ द मेजरमेंट माइनस द आइडियल वैल्यू। रियल वैल्यू जो है मींस वो ऑब्जर्वेबल वैल्यू है जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने ऑब्टेन की, दैट इज द रियल वैल्यू। रियल मींस जो हमने ऑब्टेन की, अपनी तरफ से ऑब्टेन की। वो ट्रू है या नहीं ट्रू वो हमें नहीं पता, वो तो टीचर से पता चलेगा। मींस द रियल वैल्यू दैट मे बी अनट्रू। अगर कुछ एरर है तो वो कैसी होगी? दैट रियल वैल्यू विल बी द अनट्रू, दैट विल बी द रॉन्ग, दैट विल बी द फॉल्स। अगर वो रियल वैल्यू आइडियल वैल्यू के साथ मैच करती है, आइडियल वैल्यू का मतलब ट्रू वैल्यू, गुड वैल्यू, राइट वैल्यू, दैट इज बीन प्रोवाइडेड बाय द टीचर। जो टीचर कहता है दैट इज द आइडियल वैल्यू, जो हम निकालते हैं दैट इज द रियल वैल्यू। रियल वैल्यू आइडियल वैल्यू के साथ मैच कर भी सकती है, ना भी करे, नहीं करती तो एरर कहलाएगी वो। तो मींस एरर कब कहलाएगी? इफ दैट रियल वैल्यू इज अनट्रू, दैट इज रॉन्ग, दैट इज फॉल्स। तो मीन्स हमें इन दोनों का क्या लेना है? डिफरेंस। सो एन एरर इज डिफाइंड एज द रियल वैल्यू एट द आउटपुट ऑफ ए मेजरमेंट सिस्टम माइनस द आइडियल वैल्यू एट द इनपुट ऑफ द मेजरमेंट सिस्टम। जैसे कि हमने बताया कि देयर इज ए डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद एवरी मेजरमेंट बिकॉज द एरर में बी ऑफ डिफरेंट टाइप। वो मैनुअल एरर भी हो सकती है, वो इंस्ट्रूमेंटल एरर भी हो सकती है, टेम्परेचर चेंज हो गया हो उसकी वजह से रीडिंग में चेंज आ सकता है, वो भी हो सकता है। मीन्स देयर विल बी द चांसेस ऑफ एरर। मीन्स देयर इज ऑलवेज ए सर्टेन डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी associated, that is associated with every of the measurement। Means we all when we are doing the experiment, we are doing our best, and we are doing our best to in such a way that we want to decrease this uncertainty to an acceptable value. For example, teacher is saying that the error must be only up to a level of 0.1%. We are doing our best so that the error either may be the 0% or that particular 0.1%, not more than that. We are doing our best, but we all must should remember that by repeating the experiment several times, that may lead to the better results.
अगर हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को बार बार करते हैं, आपने देखा होगा हम टीचर आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट आप टाइटेशन का करते हैं तो एक टेबल बनवाते हैं कि सीरियल नंबर, इनिशियल रीडिंग, फाइनल रीडिंग और लास्ट में लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन यूज्ड। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कौन सा? विच इज टेकन बाय यू इन द ब्यूरेट, जो आप ब्यूरेट में ऊपर लेते हैं, जो यहाँ पे आप ब्यूरेट के अंदर लेते हैं। हम आपको कहते हैं कि टेक डू द एक्सपेरिमेंट, रिपीट दैट एक्सपेरिमेंट एट लीस्ट 3 टाइम्स। आप कम से कम आप अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में आपको ध्यान होगा कि आप हमेशा ही जब एक्सपेरिमेंट को लिखते हैं, जब टेबल बनाते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल, तो उसके अंदर आप हमेशा 3 रीडिंग जरूर लेते हैं। फिर उसके बाद एक वर्ड आता है जिसे कहते हैं कंकॉर्डेंट रीडिंग। आप जरूरी नहीं 3 लें, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। फिर आपने देखा एक रीडिंग ऐसी थी जो फॉर एग्जांपल आपकी आ गई 10.5 और सारी रीडिंग आपकी आ गई 10 10 10 10। इट मींस उस एक रीडिंग में आपसे एरर हो गई होगी, बची हुई रीडिंग आपकी एक जैसी आ रही है, तो उसी को हम कंकॉर्डेंट रीडिंग कहते हैं, जो आपकी बार बार रिपीट हो गई। तो मीन्स रिपीटिशन करते हैं जब भी हम किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो दैट विल लीड टू द बेटर रिजल्ट्स। नाउ द एक्यूरेसी जो टर्म है उसकी सेंस क्या है? द टर्म विच एक्सप्रेस द करेक्टनेस ऑफ द मेजरमेंट इज कॉल्ड द एक्यूरेसी। जो किस चीज को मेजर करती है कि हमारा रिजल्ट कितना ठीक है, जो उसको एक्सप्रेस करती है, उसी को एक्यूरेसी कहते हैं। नाउ द प्रिसीजन, the repeatedness of the result or the result with minimum least count, that is the result of up to the maximum decimal places, is called the precision। उसे आप precision कहते हैं। आप दोनों डायग्राम में देखें बड़े ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको कहा था, जो एग्जैक्ट आपका रिजल्ट कब होगा, अगर हीटिंग के बेसिस पे देखें, आपको बिल्कुल आपका ठीक रिजल्ट कब माना जाएगा, आपको विनर कब माना जाएगा, आपके मैक्सिमम पॉइंट कब मिलेंगे, व्हेन यू विल हिट द एरो एट द सेंट्रल पॉइंट। मींस इफ यू आर हिटिंग एट द सेंट्रल पॉइंट, मींस you are doing your best, you have done your best, that express the correctness of the measurement, and that called accuracy. In the other side, you can see you are hitting with the arrow, you are not hitting with, you are hitting with the arrow but not at the central point, you are hitting with the arrow at some other point, but every time you are hitting at the same point। आप हर बार सेंट्रल पॉइंट पे हिट नहीं कर रहे, यहाँ पे आप देखें आप हिट कर रहे हैं किसी और पॉइंट पे, लेकिन हर बार जितनी बार भी आपने वर्कआउट किया, रिपीटेशन की, हर बार आपका वहीं पे क्लिक हुआ, तो मीन्स आपने रिपीट कर दिया, हर बार आपका वहीं पे जाके लगा, दैट कॉल्ड प्रिसीजन। आपका रिजल्ट ठीक नहीं है, ठीक कब होता? जब सेंट्रल पॉइंट पे लगता, लेकिन रिपीटेडनेस है आपके रिजल्ट के अंदर, उसे प्रिसीजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रिसीजन। तो मीन्स द रिपीटेडनेस ऑफ द रिजल्ट इज कॉल्ड प्रिसीजन एंड द करेक्टनेस ऑफ द रिजल्ट इज कॉल्ड एज द एक्यूरेसी। आप बड़े ध्यान से देखें इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब आप यहां पे कट कर रहे थे तो आपने क्या देखा? देखो, स्लाइसेस आर ऑफ सेम टाइप। फॉर एग्जांपल अच्छा रिजल्ट कब कहा जाता? जब थिकनेस इससे फॉर एग्जांपल ज्यादा होती या और कम होती। लेकिन चाहे हमारा रिजल्ट ठीक हो या ना हो, लेकिन ये प्रिसाइज है, बिकॉज एवरी टाइम द साइज ऑफ ऑल द स्लाइसेस इज सेम। आप हर बार देखें, हर स्लाइस का साइज बिल्कुल सेम है, हर बार हमारा रिजल्ट सेम आ रहा है। सो दैट कॉल्ड द प्रिसीजन। means the precise value is not always accurate, means on these all above observable experiments, we can say the precise value may or may not be accurate, means the precise value may be correct, may be accurate or may not be accurate। इसीलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं नोट की फॉर्म में, जो हमने पॉइंट आपके सामने लिखा कि द प्रिसाइज वैल्यू इज नॉट ऑलवेज एक्यूरेट, but it is also a basic fact that ki accuracy without precision is meaningless, that is not reliable, not
एंड वाइस वर्सा हम कह सकते हैं। मतलब आपका रिजल्ट एक्यूरेट है, आपने हिट किया सेंट्रल पॉइंट पे, अगली बार भी आप सेंट्रल पॉइंट पे हिट करेंगे, अगली बार भी आप सेंट्रल पॉइंट पे हिट करेंगे, अगली बार भी आप सेंट्रल पॉइंट पे हिट करेंगे, तो मीन्स आपका रिजल्ट एक्यूरेट तो है ही, लेकिन साथ के साथ फिर प्रिसाइज भी हो जाएगा, क्योंकि रिपीटेडनेस आपके सेंट्रल पॉइंट पे हो गई। तो मीन्स कोई भी रिजल्ट अगर आपका एक्यूरेट है तो वो प्रिसाइज भी होना चाहिए, तभी वो रिलायबल माना जाएगा, अदरवाइज वो रिलायबल नहीं माना जाएगा। The term which denotes the nearness of the measurement, nearness to the true value, or you can say the most expected value is called the accuracy. आप उसको accuracy कहते हैं. That is the other way to define the accuracy. While precision means it expresses the closeness of the result with the other measurements. ध्यान रखें, in case of the accuracy, it denotes the nearness or the closeness of the measurement to the true value, to the true value, or you can say the most expected value. While in case of the precision express the closeness of the result with the other measurement, which we are doing in the repeated manner. We are not saying here the closeness of the result with the true value. If we are saying that the closeness of the result with the true value, then it is accuracy. If we are saying that the closeness of the result with the other measurement, that called precision. Means the reproducibility of the result is called precision. Means the precise result may or may not be accurate. The accuracy, it is expressed in the form of errors, which could be positive or the negative, जैसे हमने पहले भी आपको बताया. While the precision is measured in terms of the deviation or the mean deviation or the relative mean deviation without positive or the negative sign. We will discuss all these things in the next incoming lectures about the deviation, what is the deviation, what is the mean deviation, what is the relative mean deviation. We will discuss about all these along with the numerical in the next incoming lectures. Means any of the experimental procedure may be highly precise, but due to some constant or the unknown errors, the result could be inaccurate. जैसे मैंने आपको कहा, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, we are trying our best to give the accurate result along with the precise result, but sometime we got the precise result that is not accurate. Measurement can be, जैसे अभी हमने जो सब कुछ डिस्कस किया, उन्हीं पॉइंटों को अब हम कंपाइल करेंगे. The measurements may be both accurate and the precise. In that particular thing, you can see all the hits are closer to the center. All the hits, first hit, you can see now the next hit, all the hits are closer to the center. All are close to each other. Means the result, जो result है वो हमारा कैसा हुआ? Highly accurate result, highly precise result. In the next one, you can see we are hitting nearer to the center, first hit, now the second hit, now the third hit, now the fourth hit. We are hitting closer to the center, but none of the hit is close to each other. They are at different places, but nearer to the center. So means the result are highly accurate because all are near to the accurate center, but they are not precise. The next one, you can see all the hits are closer to each other, but none of the hit is near to the center. Means the results are with low accuracy. They are not accurate, but the result is highly precise. In the next question, express the results in terms of the accuracy and the precision. We have 4 different diagrams. हमें ये बताना है कि इन 4 डायग्राम्स में से कौन सा रिजल्ट एक्यूरेट है, प्रिसाइज है, या बोथ एक्यूरेट और प्रिसाइज है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया. इन द फर्स्ट वन, यू कैन सी the result is both accurate and precise.
because all the hits are at the center at the same point. So results are both accurate and also precise one. In the next one, you can see all the results are nearer to the center, means the results are accurate, but none of the hit are closer to each other, so results are not precise. So in the second case, the results are accurate but not precise. In the next one, none of the hit is closer to the center, none of the hit is closer to the center, but all the hits are closer to each other. So all the results are not accurate, but all the results are precise. All the results are precise. In the last case, you can see all the hits are far away from the center, so results are not accurate. All the hits are not closer to each other, so results are also not precise. So in the last case, all the results are neither accurate nor precise. Next question, express the result in terms of accuracy and the precision by observing the below given titration. Assume that the correct reading of the titration should be, for example, number 1 question 20.10 आपकी correct reading मानी गई है. फिर आपका रिजल्ट देखें, इधर जो देखो आपको येलो कलर में दिख रहा है, यहाँ पे आपकी रीडिंग क्या आई. आपकी रीडिंग आई, इनिशियल रीडिंग इज 12.02 ml, द फाइनल रीडिंग हियर इज 32.15 ml. So the volume of the solution used during the titration to get the final result, that is 20.10 ml. So according to the first one, what about our result? The result is both accurate and precise. क्योंकि जो आइडियल रिजल्ट है अकॉर्डिंग टू द टीचर वो कितना आना चाहिए? फर्स्ट क्वेश्चन के अनुसार 20.10 ml, दैट इज द आइडियल वैल्यू, दैट इज द आइडियल वैल्यू. और जो हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो भी क्या आ गई? 20.10. व्हाट इट मींस? रिजल्ट्स, our results are both accurate and also precise. In the second case, according to the teacher, the ideal value must be 21.10 ml, and the same experiment is here. Our observed value is 20.10. Now what happens? What type of results are ours? Our results are not accurate because the ideal result is 21.10 according to the teacher, but our observed value is 20.10 ml, means our results are not accurate. But every time as we results are 20.10, 20.10, 20.10, so because of that our results are precise, because our results are continuously been repeating. So repeatedness of the result, whether the result is correct or not, that called precise result. So in the second case, what will be the answer? Our results are not accurate, but our results are precise. Now the next question. In the next question, you can see according to the teacher, you can see the reading. But according to the boys, we have two type of students, boy A, boy B. So what we can say about the results in terms of the accuracy and the precision? According to the teacher, the result is, you can see in the first line, assume that during the titration the result according to the teacher is given here, but when the same titration is done by these two set of the students, the results comes out to be, देखो titration is continuously going on. According to the boy A, the results differ from the actual reading. जो टीचर की रीडिंग है, जो जिसे आइडियल रीडिंग कहा जाता है, उस आइडियल वैल्यू से जो बॉय ए है उसकी देखो रीडिंग कितनी आई? 10.60, 10.60, 10.60, मींस नॉट मैचिंग, वो मैच नहीं कर रही है, मींस द रिजल्ट्स डिफर फ्रॉम द आइडियल रीडिंग, डिफर फ्रॉम द टीचर्स रीडिंग, सो द रिजल्ट्स आर नॉट एक्यूरेट. But every time the results are goes on repeating 10.60, 10.60, 10.60. What it means? The results are precise because the repeatedness of the result called the precise result.
So that is about the boy A. The results of boy A are not accurate, but the results are precise. What about the boy B? According to the boy B, the results are also differ from the actual reading. All the readings are not matching with the ideal reading. One of the reading is matching, but not all the readings. All the readings are not matching. All the readings are not same. Because all the readings are not matching with the actual reading, these results differ from the actual reading, so results are not accurate. And also, all the readings are not same. They are also differ from each other, so the results are also not precise. So means the results of boy B are neither accurate nor precise. Then the next question, a person bought mangoes from a shopkeeper having with the three balances giving reading as in the first balance, because we can purchase the balance of different precise values, means up to the different decimal point. In the first balance, the results comes out to be 2.5 kg. In the second balance, the results comes out to be 2.54 kg. In the third balance, the results come out to be 2.544 kg. Now explain the accuracy and the precision among their results. As we have to determine the accuracy and the precision from the results obtained from the different balances. Now what we can say, we can express our results in terms of the minimum least count. Means so the result with the minimum least count will be more precise and also most accurate. You can see in the third balance, the results in the third balance reflects the reading 2.544 kg, means up to the maximum decimal point. Means that result is most precise, that result is most accurate. So these are the different questions about the accuracy and the precision. Now perhaps you have the complete knowledge about the term accuracy and the precision. So that is all about the today's lecture. In the next lecture we will discuss something more about these terms, that is the accuracy, the error, what are the different type of errors, manual error, instrumental error, and so on. Different type of errors, different type of numericals we will discuss in the next lecture also. So thank you. That all about the today's lecture.